Yes. Okay. Have you done the questions of probability by any chance? No, actually मैंने रिवाइज कर लिए थे बट फिर नहीं किए उसके सॉल्व अभी मैं थोड़े बड़े चैप्टर्स कर रही हूँ अभी. Okay. And we did till 8th question, right? Yes. एक्चुअली ना मुझे कुछ डाउट्स हैं चैप्टर नंबर 7 से. Okay. So you want to complete probability first or firstly 7th chapter? हम पहले डाउट्स क्लियर करने हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो फिर भी थोड़ी इजी है ना. Okay. No issues. No issues. Which questions? जस्ट वेट अ सेकंड. एक्चुअली ये जो 7 चैप्टर है ना ये ना मतलब उन चैप्टर्स में से है जो मुझे बहुत ही टफ लगते हैं मतलब इस बुक में. Coordinates. एंड इससे मैंने या So we did know there were only two formulas related to it. Okay, let's discuss. दे वो फॉर्मूलाज बट इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है. ये जो 7.1 के लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं Mm-hmm. इन्हें मैं सॉल्व कर लेती हूँ बट इन सॉल्विंग पार्ट में कर लेती हूँ बट ये टफ लगता है इसे समझना. Last 4 questions. I guess there are 10 या questions, right? So 7 to 10. No? हम्म. Okay, which one you want to discuss? um 9 and 10 first. Okay, let's see, ninth one. So I'll tell you the logic behind what we are doing in solving it. Okay. So question says if Q is 0, 1 is equidistant from P. So let's say we have one point P which is 5, minus 3, and Q 0, 1 is equidistant from P and R. Let's say R is here. Obviously, it won't be like this, but I'm making just to make you understand easily. R is x, 6, and Q is between that. Equidistant means from P to Q and from Q to R we should have equal distance. दोनों का distance equal होना चाहिए, है ना? तो अब हमें Q के coordinates भी दे रखे हैं 0 to 1. ठीक है? तो यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको भी डी ले लेते हैं और जो यहां तक डिस्टेंस होगा उसको भी डी ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, इक्वी डिस्टेंट है, राइट? नाउ इट इज गिवन दैट PQ is equal to QR. So now पहले हम PQ का डिस्टेंस निकालते हैं. What will it be? बट कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि PQ is equals to QR. लिखा हुआ है, रीड इट. इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब है? Q का P और R से, राइट? दैट व्हाट इट मींस, इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, तो पहले PQ का डिस्टेंस निकालते हैं. What will it be? अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा when we put the values? Let's say this is x1 y1, second point is x2 y2. ठीक है, put the 0 value. minus 5 होल स्क्वायर 0 minus 5 whole square, yes. प्लस 1 minus minus 3 1 plus 3 लेते हैं ना 1 plus 1 minus that will become plus 3. या सो मैं डायरेक्ट बता रही थी. Okay, it will become, first bracket will become 25 and next bracket 16 and 25 plus 16 will give you 41. So it will become under the root 41. So this distance is 41. So that means, sorry, under the root 41. So that means this distance is also under the root 41 because both were same. Now, Yes. apply the same formula here when you are finding the distance from Q to R and equate it to root 41 because now we know the distance, we need to find this value of x. Do it. Yeah. And 8 is or just wait a second. बताओ.
किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि हम पूरा का आंसर निकाल के सिर्फ ये वैल्यू लिख देते हैं जो डायरेक्ट 32 होती है, बट किसी किसी में हमें एलसीएम लेके जैसे और भी ऐसे लिखना होता है कि एक अंडर रूट है और एक बाहर है। करेक्ट। तो ऐसे मुझे ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि पीछे कभी कभी इस फॉर्म में लिखा होता है, कभी इस फॉर्म में लिखा होता है। ओके, सो आई टेल यू कि कब कौन सा आंसर हमें निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से √32 है और एक है √65। मैं आपको दो एक अलग अलग आंसर्स के बारे में बता रही हूँ। तो आप जो भी नंबर होगा ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 32 की जगह लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 65 की जगह लिख सकते हैं 5 इंटू 30। स्क्वायर रूट से कुछ भी बाहर निकालना है तो पेयर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक 2 का पेयर है, एक और 2 का पेयर है, तो इस फर्स्ट पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, सेकंड पेयर में से भी एक और 2, और अंदर बच जाएगा एक 2, विच विल बिकम 4√2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई पेयर बन रहा है? ना ही 5 का बन रहा है, ना ही 13 का। दैट मीन्स हमें यहीं पे छोड़ना है। तो ऐसे पता चलता है कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही छोड़ना है। लाइक इस क्वेश्चन में भी ना, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में मैं सॉल्विंग पार्ट कर लेती हूँ, बट ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब रीड करने में कंफ्यूजिंग लग रहा है। आपको सिर्फ एक समझनी है, इक्वी डिस्टेंट, जिसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस। क्यू का पी से डिस्टेंस और क्यू का आर से डिस्टेंस सेम है। एक बार 10th आप ट्राई करो अभी, फिर हम डिस्कस करते हैं उसको। एंड वन मोर थिंग, लाइक मैंने ना बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि एप्सिका वो क्या होता है? क्या होता है? ओस एप्सिका। एप्थिटा। एप्सिका एप्सिका। एप्सिसा। ओके, एप्सिसा इज बेसिकली एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है ना, दिस इज एप्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट। ये वाई एक्सिस के लिए होती है और ये एक्स एक्सिस के लिए होती है। ठीक है। एक्चुअली मैंने ना एनसीईआरटी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लिया है 1 बाय 1, तो फिर उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट मैं ये ओसवाल हो गया तो फिर मैं इससे करूंगी अब वो, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो देन आराम। ठीक है, तो अभी तक के आपके डाउट्स क्लियर हो गए जितना भी किया, या और भी कुछ है डाउट? तो एक बार आप 10th क्वेश्चन ट्राई करो, सो दैट आई विल गेट कॉन्फिडेंट कि आपको आ गया है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1। फिर हम आगे वाले चैप्टर में चलेंगे।
Done not doing it? एक्चुअली दोनों में इक्वेशन आई है लास्ट में. इक्वेशन क्या आ रही है? x square plus 9 minus 6x. x square minus 9 x square plus 9 minus 6x, okay, plus y2 y square, plus y square plus 36 minus 12y. correct.
This is one side. What is the second side? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार रीचेक कर। So it says find a relationship between x and y such that point xy is equidistant from, let's say this is point 3 comma 6 and this is point minus 3 comma 4 and this is the point x comma y. So this distance and this distance is same. So let's say this is also d and this is also d. So when you will apply the formula of distance here, you will get this. Now similarly you have to apply for these. Find it out and equate it because both of them are d ना, दोनों ही d है, दोनों के जो भी आंसर्स आएंगे उनको इक्वेट करेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ठीक किया है, अब आपको ये सेकंड पार्ट करना है। जैसे ये लेट्स से ABC है, अब आपको BC फाइंड करना है, आपने AB कर दिया है। एक्चुअली सॉल्विंग पार्ट फिर भी मैंने राइट करेक्ट ही किया था, बट इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है। लाइक 7th में कुछ और फाइंड करना है, 8th में डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, दे विल नेवर बी बस वाई फाइंड करना था। हाँ, तो आपको हर क्वेश्चन की कंडीशन समझनी होगी, क्वेश्चन सेम तो नहीं होंगे ना सारे, so you have to understand what each question say and do it accordingly. So ओके, एक्चुअली मैंने 7.2 भी हाफ में किया है। I'll complete it today and इस बुक में से भी कंप्लीट कर दूंगी। firstly complete this one, Riya. We are doing one question. Complete this one first. Okay. um, 9 plus x square. 9 plus 9 plus x square plus 6x. Very good. Plus 16 plus y square. Plus 16 plus y square plus 8y. Minus 8y, sorry. Yeah. Minus 8y. Yes. Now you have to just solve it. X square will be cancelled out. Y square will be cancelled out. Take everything on that side, left side, and solve for x and y. And the sign dimension changes. Yes, and you will get one equation in terms of x and y. Yeah. Now let's do probability. Or do you are on mute? Yeah. Okay, let's start with 8th. We did 8th question. Now you have to try. Okay, 10th was also done. We have to start from 11th. Yes, 11 seconds. That's what. Give me 1 minute, Riya. Okay. Try this question. I'll be back.
It's 8/15. Question number 11. Yes. It says Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper tanks out one fish, 5 male and 8 female. So how many total fishes are there? 13. 13. And out of that, we need to find the probability for? Oh, sorry. So it will be 5/13. Yes, absolutely right. Let's solve 12th one now. I think ये हमने डिस्कस कर लिया था ये क्वेश्चन. ये डिस्कस हो गया. 12th one, yes, we discussed. 13th. 13th भी हो गया था. 14th, yes, we need to do 14th. No, actually 14th भी हो गया था. Let's do it again because it's related to cards. Not all the parts, just 3rd and 5th card. Yeah. But actually मैंने याद नहीं किया ये कार्ड्स के बारे में. Like Okay, whatever you remember, just tell me. I'll write it here. You told that there are 2 pairs of cards. How many cards are there in total? 52. 52, correct. कैसे दो डिवाइड होंगे हाफ हाफ? Just wait a second. Each pair has 13 cards. Yeah, that is another thing. पहले red और black में divide होगा, right? 26 red, 26 black. अब 26 red में there is 1 heart, 1 diamond, 13 cards to each, and 1 spade and 1 club, 13 cards to each. और हर 13 कार्ड का जो सेट है उसमें A होता है 1, which is ace. 2 to 10 are numbered cards. 11 is J, which is jack. 12 is Q, which is queen. And 13 is K, which is king. Okay. So now try this. Let me know. Yeah. Just wait a second. Okay. Can you tell me the name of black cards again? Spade and club. Okay. And red is hearts and diamonds. Yes. Now do this question. Just wait a second.
Okay, so it will be okay. 2 out of 52. For a face card, how many face cards are there? We discussed it, no? That 4. means cards which have faces on it. So J, Q, K are with faces. 4 are lettered cards. Face cards are 3. J, Q, and K. And in every heart, diamond, spade, and club, we have 3 face cards. So in total, it will become 12. over 52. to get the final probability. That is your third part. Now the fifth one. Number of total outcomes upon number of total cards, right? Number of favorable outcome. 12 is what you want. Oh, sorry. Upon me total outcomes. Correct, correct. Now we have queen of diamonds. Sorry, a spade for the fifth part, a spade. Yes. Fifth part. Sorry. 13 upon 52. 13 upon 52. absolutely right. 1/4 is your answer. Now let's try 15th one. Is it 10 upon 50? Or the 15th first part. Yeah. How did you get 10 upon 50? Actually यहाँ पे लिखा हुआ है the 10 jack, queen, king and diamonds. But there are in total 5 cards only. There are no 52 cards. सिर्फ 5 ही cards हैं रिया. उसमें से एक कार्ड है 10 number. एक कार्ड है jack. Oh, it's 10 number. I thought 10 cards. Then we have queen Q और एक है king which is A और एक है ace of diamonds which is okay. So we have A here. तो ये सारे diamonds के हैं. तो इसमें पूछा है एक what is the probability that the card is queen? 1 out of 5. Yes, 1 upon 5, sorry. Yes. And if the queen is drawn and put aside, queen को निकाला side में रख दिया, ठीक है? What is the probability that the second card picked up is an ace? 1 upon 4. Very good. And a queen? Queen, there is no queen. So that means impossible event 0. जब कुछ है ही नहीं तो उसकी probability 0 हो जाएगी ना. ठीक है. तो question को sentence by sentence read करोगे तो you will get the clarity of what it is. ठीक है. Let's do. Okay. Like these questions are so not so easy. Let's discuss a tricky one. What? These questions are Easy. Let's discuss more tough one. Tougher one. अभी जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, we have 3-4 questions left. I think we should discuss all of them क्योंकि अभी आगे थोड़े टफ हो जाएंगे. No, actually there are 25 questions. 25. Okay. And we are on 10 questions. 10 questions. Okay. Do you have any question which you want to discuss? Just wait a second. Let's discuss 18th. 18th. Okay. A box contains 90. Firstly, you will try. Then I'll. We'll discuss.
What are this? What are? This Anything 90 discs है circular. ना? Yeah, anything which is circular. It is used for construction. There are so many ways to. There's different types of Okay. discs we have. There are playing discs also. Hmm. Um, a two-digit number. Um, 81. 81. 81 upon 90. Very good. Absolutely right. Okay. Number. You want to discuss or is it clear? Yes, it's clear, but second part. A perfect square number. What is a perfect square? Like जिसका perfect square होता है like 4. So you have to figure out how many perfect squares are between 1 to 90, count them, and then find their probability. But it will take too much time in exam. It won't. You know, 1 ka square, 2 ka square, 3 ka square, like that. Don't have to write it. You have to just count it and see कि 90 तक कितने squares आते हैं. 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए. Okay. Give it a try. Perfect square. How many perfect squares? Just wait a second. Like मैंने लिखनी है. Count करनी है.
I think that they are 60. No, 6. Can you tell me what you have written? Like 2, 4 and then मैंने खुद ही लिखे हैं like 2 is not a कि perfect किसके square. what? 2 is not a Oh, perfect. sorry. From 4. 1. Square of 1 is 1, na? So 1 is a perfect square. Yeah, I forgot to write one. Then we have 4. Next one is 8, 10, 12, 14. these are even numbers, Ria. These are not perfect square. Perfect square means you have to find square of an integer, positive integer, because we need to figure out from 1 से 9 10 is not a perfect square. एक बार 16 is 4 के बाद 3 का स्क्वायर, जैसे ये 1 का स्क्वायर था, ऐसे ये 2 का स्क्वायर इज 4. 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? Ria, you are on mute. 9 actually I know, but I just wrote even numbers in frustration. Okay. You want to give it a try? Yeah, actually, it's a silly mistake. Just wait a second. Actually, they are 1, 4, 9, and I'll tell you my count. 1, 4, 9. After that? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Very good. 64 and 81. So these are the 9 numbers, 9 perfect squares that we have from 1 to 9. So what will be the probability? 9 upon 90. 9 upon 90. 9 upon 90. That will give you, if you will simplify it further, 1 upon 10. 1 upon 10. That's your answer. Do Okay. we have to simplify it? We can leave it 1 by 10. We can also convert it into decimal. Both are correct. Okay, actually, I Depends didn't on the see options, na? It's an objective type paper, so you know whether the options are in fractions or in decimal. अगर fraction में Yeah, actually, छोड़ दो. 6 chapters आएंगे. And उसमें like कुछ definitions भी मैम ने भी मुझे याद करवाई है, like trigonometry की, and बहुत सारी हैं. तो फिर उन्होंने बोला कि इनकी definitions याद करो. Do you think कि मुझे किसी और chapter की भी करनी चाहिए? Like, Second one was polynomials, binomials, monomials, and I'll do one thing. I'll figure it out from every chapter, and then we can discuss in the next class. ठीक है? okay. Because there are chapters जिसमें से definitions निकल जाएगी. आपको कौन सी बताई है आपकी मैम ने? Like अभी trigonometry की बताई है. Chapter 12 areas में से भी बताई हैं.
हाँ, तो मतलब कुछ कुछ सब में से निकल जाएगी, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना उसी में से डेफिनेशंस आ जाएंगी, तो हम वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके। अब जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5, फाइंड इट आउट। Okay, so it's 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, and 90, and 95. Why 95? Numbers to 1 से 90 तक है ना, till Okay, 90, till 90 it is absolutely right. So how many numbers are there till 90? just wait, let me count. There are 80 numbers. 18 numbers. So what will be the fraction that you will get as a probability? 18 upon 90. Cool, ठीक. Okay. Okay, next question which you want to discuss? Just wait. I think 20 is a good question. 20th one. Yes. Give it a try, then we will discuss. Okay. Like इसमें वन डायमीटर तो दिया ही नहीं हुआ किसी भी सर्कल का. 1 minute. Question says we have a, suppose you drop a die at random on the rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? So diameter is given, no? 1 meter. Diameter given to area 1 meter. It will land inside the circle with diameter. ये पूरा 1 हो जाएगा ना? Oh, actually I thought कि 3 है. 3 is the length of the rectangle and 2 is the breadth or width of the rectangle. Okay. So like पहले मैं perimeter निकालूं इस triangle, like area. Area, yes. And then circle का area. Yes, good. Right track. Just wait a second. Okay.
It will be 3 upon 14 upon 12. Can you please repeat? It will be 3.14 upon 12. 3.14. We always say numbers after digits after point. It won't be 14, it will be 14. Okay. 3.14 upon 12. Okay, I'll just check what is area of rectangle. Oh, sorry, it's not 12, it's 6. 3 upon 14 over 6. Okay. Yeah, actually, I did it wrong with this. What is area of rectangle? 12. 12. Sorry, 6 again. 6. Okay. What is area of circle? It's 3.14. 3.14. Why? What is, so the formula is pi r square, right? Hmm. So firstly, r is what? R is, it will be half. Yeah. Again. Yeah. So take it So it will be. I Can you just see thought this? it will be. Yes, I. Okay. So it will become, this will be cancelled out. Can we say 11 upon 14 will be area? Yeah, actually मैंने 1 meter ले लिया था. Okay, so you have, that is diameter. For radius, you need to half it, right? I know. Okay. So probability that it will land inside the circle? Inside the circle, 3.14 upon 3.14. Upon 11 upon 14 ना, so इसे further भी तो solve करना पड़ेगा. See, either you can keep it simply 11 upon 14. ये area of circle हो गया 11 upon 14 upon Yes. upon area of rectangle which is 6. तो ये हो जाएगा 11 upon 14 into 6. ये 6 यहाँ आ जाता है multiplication में. Yes. So it will become 11 upon 84. That's your answer. If they want in Like decimal. ये तो identity है ना, like A upon B upon C upon D. हाँ, वाली वो identity apply जो कर 9th सकते class हो. में थी. Right, right. तो अब यहाँ पे d तो 1 ही है, तो ये उल्टा जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, तो 14 और 6 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा है. Isn't it? Yes. ठीक है, तो 11/84 is the fraction that you will get. You can also convert it into points depending on कि options क्या है. Okay. Okay. Now, Next question is? just wait a second. Yeah. Like when I speak now, मेरी voice echo हो रही है. Okay. Maybe you're recording that's why. Possible. But generally recording में होती नहीं है. Can we do 25? Yes. Let's do 25th. Okay, so we have to give the Like, just wait a second. I want to ask something. Like जब मैं chapter number 7 solve कर रही थी ना, तो फिर उसमें जब मैं solving part कर रही थी, तो फिर मैंने question को 4 times किया, and then मैंने देखा कि मैंने सिर्फ एक ही mistake की हुई थी. वो identity है ना a square plus b square minus 2ab. इसमें कुछ exception भी होता है क्या? इसमें एक्सेप्शन नहीं होता, बट एक और आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है.
बट ये यूज नहीं हुई 7th चैप्टर में. So which identity you are talking about? फर्स्ट वन. इसमें एक्सेप्शन क्या मतलब? लाइक मतलब अगर कोई प्लस का नंबर होगा तो फिर हम +2a भी ले लें. हाँ, तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देयर आर टू आइडेंटिटीज, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है. माइनस वाली ये है और प्लस वाली ये है. ओके. Okay, let's discuss this. Okay, give it a try first. First part. What is the first part? Like फर्स्ट वन में तो ये हो ही नहीं सकता ना, मतलब फर्स्ट वन मुझे समझ नहीं आया ये बोल रहे हैं कि दो कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है, और देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स एंड 1 हेड 1 टेल. तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं? लाइक 1 हेड एंड 1 टेल कैसे हो गया? आपके पास 2 कॉइन्स थे, आपने उसको टॉस किया, या तो दोनों हेड्स आ सकते हैं या दोनों टेल्स आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल्स आ सकता है. ओके ओके, लाइक सिंगल केस के बारे में बात हुई है. ओके. हाँ, ये भी तो हो सकता है ना. टेल एंड हेड. ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं. यस, बट इसके अंडरस्टूड. इसके बारे में क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला गया कि हेड टेल और टेल हेड 2 केसेस, तो टोटल 4 केसेस बनते हैं. यस, सो 1/4 होना चाहिए. यस. लेकिन ओके, इसमें ट्रू एंड फॉल्स है. ओके, सो ये फॉल्स हुआ ना फिर तो. हाँ, क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट. सो दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि 4 आउटकम्स से 1/4 बनेगा. ओके. सेकेंड वन, इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. हाउ? लाइक इसमें डाई को जब थ्रो करेंगे तो फिर 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, ऑड नंबर एंड इवन नंबर. कितने ऑड नंबर होते हैं? कितने ऑड नंबर होते हैं? 2. 2 ऑड नंबर्स होते हैं. सॉरी, 3. 1, 3 एंड 5. और कितने इवन नंबर्स? 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6. वेरी गुड. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी So 1/2. राइट. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. Yes, so and I want to say something. Like I know, like मेरी टीचर्स भी कह रही है कि एनसीईआरटी सॉल्व करना इनफ नहीं है, बट लाइक ज्यादा टाइम नहीं बचा है 11th को एग्जाम, एंड देयर आर सम चैप्टर्स लाइक जिसमें ना बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, बट पोस्ट वाल में ना सिर्फ 20 लाइक इतने ही है. तो इफ आई सेंड यू पिक्चर्स फ्रॉम अनदर बुक, लाइक आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं कितने क्वेश्चंस करूं उसमें से. send me, I'll share it. No issues. आप सिर्फ मार्क करवा देना मुझे एंड आई डू इट. ठीक है. डन. There are only some chapters like trigonometry, and there is no need in trigonometry, but in algebra and in coordinate geometry. ठीक है, आप मुझे चैप्टर्स भेजो. ठीक है, I'll mark it and then आप वो क्वेश्चंस कर लेना till next class. ठीक है. Just And the 3 remaining chapters questions we of the need, Bhagavati. and yes, there are no remaining. Yeah, there are 3 remaining.
मोर देन 3 आई गेस, क्योंकि हमने 16 से 25 तक 3-4 क्वेश्चन ही किए हैं, तो आई गेस 6-7 क्वेश्चन और होंगे. Yes, I'll do it. Okay, so we'll discuss once you will complete it, then I'll keep one class, then we'll discuss our doubts and the remaining questions. ठीक है, that's all. Yes. Okay then. You'll keep on class? हाँ, I'll keep it accordingly ना, जब आपका वो complete हो जाएगा, जो भी आप. Okay, so but it's not about completing, like completing as in, नहीं, जब तक डाउट्स नहीं आएंगे तब तक फिर करेंगे ना. एक बार डाउट्स आपके शुरू हो जाएंगे, then but after completing term 1 syllabus we can start second term syllabus, right? Yeah, we can do that. But firstly, you have to prepare for the term 1. You're talking like last class होगी, so I was afraid. नहीं, I'm talking about कि आपको अभी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ओवर हो गया, तो हमारी तरफ से सिलेबस टर्म 1 का कंप्लीट हो गया. अब हमें क्या करना है? But you can take test, or if I have any doubt from any chapter, then I can ask, right? That what I'm saying कि आप till 11th, right? आप क्वेश्चंस करो, फिर हमारी डाउट क्लासेस होंगी. वो 11 तक ही बोल रही हूँ. ठीक है, ओके. And like मुझे ना सिर्फ algebraic वाले quadratic equations वाले chapter में ही need है, so can I share a PDF? Yes, you can do that. Okay, thanks. Okay then, I'll see you in next class. Bye. Okay, bye. Take care. You too.